students, I know you all are aspiring for law, and for law entrances, as mentioned herein, you are very confused how to go about that. So today I, Jyoti, I am going to tell you about English language, reading comprehension, syllabus analysis, and I'll analyze each angle how to go about this subject. With previous year analysis, how many questions came, what topics to be dealt, and how to do that. So come join with me. If we see 4-year scenario, this is the number of questions, level of question, whether they were easy, they were moderate, they were difficult. So in 2024, the number of questions came 20 plus, in 2023 28 plus, in 2022 24 to 27, 2021 30. So from this we analyze that we can expect questions ranging from 28 to 32. And in level, this paper was moderate to easy, 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 moderate. So the analysis says paper is not too difficult, but yes, the number of questions says that it is an important part of the examination. So how to go about it and what to focus on? Grammar, vocabulary and reading comprehension are the most important spheres to focus on. As I said, 28 to 32 MCQs to be expected, and what topics to be covered. First is vocabulary. Vocabulary are those words which we use in our pronunciation, in our English language, in day-to-day basis. So if you want to improve your vocabulary, you should newspaper daily. That will improvise your vocab. Second, fill in the blanks. Fill in the blanks आप 10th, 9th, 8th जब भी इंग्लिश का पेपर देते थे और इन below that classes also, तो आपको एक fill in the blanks दी जाती थी in which you have to fill the most appropriate option according to you. That should be grammatically correct. So fill in the blanks deals that. Sentence completion. Same as in the fill in the blanks, here also you have to complete the sentence with the correct grammatical rules and options. Now we'll come with the finding errors. Here there is a sentence given in which some of error is identified and it has to be identified by you. How to identify that error is in form of grammar rules like verbs, tenses, adverbs. सबके सेंटेंस फ्रेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं. टेंसेस में आपने इतने सारे रूल्स पढ़े होंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, और उनके भी आगे फर्दर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस और उनके भी रूल्स. तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है, वो आपको निकालनी है और फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट करना है with the options whichever is available. Synonyms and antonyms. This is same like the vocabulary, but what is synonyms? Synonyms is the same meaning of 2 words. Those words are called synonyms. Antonyms, when 2 words are of opposite meaning, that are called antonyms. Reading comprehension. For reading comprehension, vocab, synonyms, antonyms, best remedy to deal with these 3 topics is newspaper. And if you want to know how to read newspaper, I cannot add here, this video be bit lengthy, but we have created a video on this topic. I'll pin at this video, or you can go to our channel Wakalatnama to know more about that, how to read newspaper. Now comes proverbs, adverbs. Proverbs are short sentences जो कि जनरली या तो किसी के द्वारा एडवाइस दी गई होती है या वो जनरली नेचर ऑफ ट्रुथ में होते हैं. एडवर्ब्स
adverbs are those which are added with the verbs to determine its meaning. Like हम किसी लड़के को कहते हैं ब्यूटीफुल, बट अगर हम उसके साथ एड ऑन कर ले एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दैट इज नोन एज एडवर्ब. जब हम वर्ब के साथ कुछ एड ऑन करते हैं विच मेक्स इट सेंस मोर, तो वो एडवर्ब हो जाता है. नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस. हिंदी में मुहावरे कहते हैं, इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं, बट दीज आर फ्रेजेस जिनके मीनिंग्स होते हैं, तो वी हैव टू डील विद दिस. सो here are the important topics for that paper. Weightage of English language 25 to 27%. You cannot skip on that part. And if you really want to deal with this very nicely, then newspaper should be the must in your regular schedule. So this section of CLAT UG consists of 450 words passage. Newspaper पढ़ने के लिए मैंने क्यों बोला? बिकॉज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, और आर्टिकल में आप स्कैन करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो वहाँ से आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती हैं, जो कि आपको हेल्पफुल करती हैं कि आप जब पैसेज रीड कर रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए. प्लस यू नीड टू बी वेरी मैनेजिंग अबाउट द टाइम, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एंड पैसेजेस आर a bit long. उन्हें understand भी करना है, and after that you have to solve the questions as well. So it is a time taking process. तो न्यूज़पेपर आप पढ़ने की हैबिट डालेंगे तो आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, प्लस योर टाइमिंग विल गेट रिड्यूस. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए पहले ज़्यादा टाइम लगेगा. आप न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे तो पहले होगा कि आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, बट अल्टीमेटली जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो देन यू विल सी कि आप 30 मिनट्स में पूरा न्यूज़पेपर कवर कर ले रहे हैं. दैट इज़ ओनली अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस. सो यू हैव टू डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस. सो न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स डेली फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours. So this was all about English language. If you find any other query, our channel have detailed analysis of each and every subject. So come and join us. We have started this venture of about spreading legal awareness. Thank you so much. Please like and subscribe our channel.